Bismillahirrahmanirrahim, and Assalamu alaikum to everybody, and Yadi Mother too. Let's start this program. I'm very happy to tell you that ये हमारा 11वां, in fact 12th webinar है आज, और we are back with a very interesting topic today, which is called University Selection Process. And I'll just quickly introduce our board. What have we been doing since the last few months? In fact, it's almost going to be a year. ये जो career facilitation series है with the digital team, we started that off back in the COVID days, जब there were lockdowns and people were not able to go out. I think I see some people saying no sound. I think there's please restart your computer or your phone, whatever, or rejoin. You'll be able to hear me fine. So I was telling you that we started back in COVID, and then there was a break, and then we restarted these sessions about a year back. मेरा नाम इमरान भमानी है, और I lead this digital outreach initiatives. What we do is that we call experts in the field of careers, and we have been taking individual careers webinars in the last 7-8 months, including different topics such as careers in computer science, careers in social sciences, media sciences, and etc. And you should be able to find all our previous webinars on our YouTube channel. Jo ab tak aap, if you're subscribed to our newsletter, you would be able to find, but in the end of the session we'll also post it here. If you see it's already there in the text which we sent you on WhatsApp as well. So if you want your friends to join, please share them the video, YouTube live video link. On Zoom we can have a maximum of 100 people. If we exceed, then people will have to join on YouTube. So during the webinar, it will be like a conversation with our guest. I'll be asking a few important questions, but if you think there are some questions which are in your mind, आप उसको chat window में डाल सकते हैं. And we have some volunteers with us also on the chat. My colleague Asif is there. If you have any question, just put it in the chat window, and Asif will take note of these questions. We'll try to answer all general questions live, and if there are more specific questions, you can send us later as well. So I'll just quickly introduce now. We have Salman Khimani with us to talk to us today. He has been associated with the field of career guidance for almost 20 years, and during this time he has conducted several hundred career guidance sessions and individual advising conversations also across Pakistan. Salman is a Fulbright Scholar and has postgraduate degrees from Harvard University and IBA Karachi. He is currently professionally associated with Habib University as Director for Academic Operations and Strategic Planning. Salman, very, very warm welcome to our webinar. Thank you very much, Imran, for the invitation, and always a pleasure to be conducting some sessions for the youth in Jamaat. Thank you very much. And I'm you're also part of the Aga Khan Education Board for Pakistan since a long time. So welcome again. Let's jump directly into it. हमारे जो सेशन है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन प्रोसेस, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर प्री ग्रेजुएट को हर बार एक मोटिवेशन की जरूरत भी पड़ती है, एक रीइंफोर्समेंट की जरूरत भी पड़ती है. अदरवाइज as a student everybody struggles कि कौन सी यूनिवर्सिटीज में लेनी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. कुछ कॉलेजेस में, कुछ यूनिवर्सिटीज में आई थिंक काउंसलर्स गाइड कर देते हैं, बट जनरली स्पीकिंग our Jamaati members also, mostly from the northern area side, are always more interested in knowing how can they do it directly. So, अगर मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँ that for all the pre-graduates, what is the ideal time कि जब एक स्टूडेंट को ये सोच स्टार्ट करनी चाहिए that which universities to choose, या इस मोड में आना चाहिए that now we will have to get admission in university. What is the ideal time?
So thank you, Imran, for this. Is it okay if I'm bilingual, both English and Urdu? I'm मैं sorry, bilingual Salman, बात करूँ तो you, that's. yeah, sorry. Is it okay if I'm bilingual, English and Urdu दोनों mix करके? Imran, can We you can hear me? keep it bilingual. Yeah, I think your connection, internet connection is a bit unstable. Are you back? I hope everybody can hear you. ठीक है. So before I maybe respond to your first question, मैं सिर्फ पहले ये बात करना चाहूँगा कि देखें जो भी मैं आज के सेशन में पर्सपेक्टिव्स शेयर करूँगा ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं. ये कोई हरफ आखिर नहीं है जो कि हमारे अक्सर माशरे में होता है कि मेरे फ्रेंड ने कह दिया है या मेरे पेरेंट्स ने कह दिया है तो अब मैं ये करूँगा. So my perspective, my advice is one of the many advices that students should take when they are deciding about their careers. Now to answer your question के what is an ideal time? अच्छा अब इसमें जो है वो again there are different perspectives. मेरी राय में there are at least two possible timelines. One is an ideal, one is little less ideal. लेकिन ये दो timelines ऐसी हैं जिसमें आपने एटलीस्ट यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के हवाले से सोचना शुरू कर देना चाहिए. So अगर आपका ताल्लुक लोकल एजुकेशन सिस्टम से है तो आइडियली जब आप क्लास 9th शुरू कर रहे होते हैं उससे पहले you should just start thinking about what field you want to go into, what universities are possibly you are exploring, and I'll explain why. क्योंकि जब आप 9th में सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो आप एक important decision ले रहे होते हैं कि मैंने साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, जनरल लेना है, and I think eventually that decision does impact which university you end up going, right? अगर आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी बहुत सी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन क्राइटेरिया में होता है कि आपने मैट्रिक में इतनी परसेंटेज ली हो या आपने इंटर में इतनी परसेंटेज ली हो मिनिमम या आपने साइंस में ये सब्जेक्ट्स पढ़े हो. तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप यूनिवर्सिटी के बारे में सोच रहे हो तो उसके एडमिशन क्राइटेरिया के हवाले से सोचना जल्दी शुरू कर दें ताकि आप उसी हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लें. ऐसा ना हो कि आपका इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने 9th में फॉर एग्जांपल आपने कॉमर्स ले लिया और फिर बाद में जाके आपको कंप्यूटर साइंस का शौक हुआ. फिर आपको मालूम पड़ेगा कि अरे अगर मैंने क्लास 9th में साइंस लिया होता तो शायद मेरे चांसेस एडमिशन के बढ़ जाते क्योंकि कंप्यूटर साइंस के लिए 9th मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर इंटर में साइंस की रिक्वायरमेंट होती है. So some of these are important decisions in grade 9. अगर आपने of course O levels किया है तो O levels के फर्स्ट ईयर में ये important decisions होते हैं. So मेरे हिसाब से जो आइडियल टाइम होता है वो क्लास 9th से पहले यानी 8th क्लास के एंड में जब आप 9th क्लास में अपने कोई सब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर रहे होते हैं that is the ideal time to start thinking about universities and what kind of fields you want to go into. Second, slightly less but still an ideal time is after your O levels, yeah, after metric, and I'll explain why. So again, जब आप A levels में या intermediate में कोई subject selection कर रहे होते हैं तो again clearly अगर आप इंटर कर रहे हैं तो you have clear choices of pre-medical, pre-engineering, commerce, humanities. अगर आप A levels कर रहे होते हैं तो you have certain selection of subjects. University are very clear in terms of what subjects are expected for admission criteria. You cannot go into a medical college without biology, chemistry, and physics. You cannot go to an engineering school without physics, chemistry, and math. Computer science के अंदर भी कुछ universities बहुत tough हैं कि आपके पास physics, chemistry दोनों आना चाहिए. कुछ universities कहती हैं physics भी होगा तो चलेगा. So again, you don't want to be in a situation जहाँ पे आपने कुछ subjects select कर लिए हैं और जब आप किसी university के लिए admission के लिए जाते हैं तो you come to know कि मैंने तो वो subjects लिए ही नहीं हैं जो उस university के admission की requirement है. So again, very important time period. The worst, I will also mention what is the worst time period. The worst time period would be when you have finished your intermediate or A levels. कि अच्छा मेरा A levels के exams खत्म हो गए हैं, मैंने इंटर कर लिया है, अब मैं सोचता हूँ कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहिए. That's the worst period because by that time it is very likely that you have missed the admission cycles of more than 70% universities because a lot of good universities run their admission cycle 6 months before you appear for your A level or intermediate exam. So ideal time is immediately after 8th grade. Slightly less ideal time is beginning of after your metric or your first year.
and then before intermediate. Let me try and unplug my headphones so that may help. Yeah, so while you do that, Salman, I think that's a very good suggestion because देखा मैंने भी यही है that when students are asked to choose subjects in some of the Cambridge schools, at that particular point they're not thinking 4 or 5 years ahead. I think it's very, very important to थिंक अहेड के जिस तरह से आपने खुद कहा कि आपने बायोलॉजी अगर स्किप कर दिया 9th में, हाउ वुड यू देन बी एलिजिबल टू गेट इनटू a medical university. So I think it's more with the children, but इस मौके पर तो चूंकि एक बच्चा मेरे ख्याल है 15 या 16 साल का ही है, आई थिंक पेरेंट्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और डेफिनेटली इफ दे आर टेकिंग करियर काउंसलिंग उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बताया जाए ये बात बार बार, क्योंकि इस वक्त सोच लें कि क्या आपने 5 years डाउन द रोड किस एटलीस्ट फील्ड में जाना है, एंड देन यू कैन शॉर्टलिस्ट द यूनिवर्सिटी. That's a great answer, Salman. Moving on, so and now what are the key factors that the students should consider when selecting universities? Now I'm sure there are many factors जब आप सोच रहे होते हैं, and certainly you'll feel lost. What are the key factors that the students should consider? कौन से factors होते हैं? इस पे I think we will need a completely separate 1-hour session, but I'll probably briefly talk. कुछ कंसेप्चुअली मैं बात करूंगा और फिर मैं कुछ डिटेल लेवल पे आऊंगा. देखिए, कंसेप्चुअली 2 मेजर फैक्टर्स होते हैं अगर आप किसी भी 2 मेजर कैटेगरी ऑफ फैक्टर्स होते हैं अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं या इंतखाब कर रहे होते हैं. पहला ये है कि व्हाट आई कॉल यूनिवर्सिटी प्रोफाइल या यूनिवर्सिटी पर्सोना. यूनिवर्सिटी का पर्सोना क्या है? यूनिवर्सिटी बड़ी है, छोटी है, पब्लिक है, प्राइवेट है, offers lot of programs या offers a few programs. वहाँ पे किस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, किस तरह के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आते हैं, कौन से प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, किस तरह की फैकल्टी वहाँ पे पढ़ाती है, वहाँ का माहौल कैसा है. कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस में बड़ा सियासी माहौल होता है, कुछ में बड़ा एकेडमिक माहौल होता है. तो हर यूनिवर्सिटी की एक पर्सनैलिटी होती है, and you have to understand what is the personality of that university. So that's one major category of factors, and we'll go into more details of it. दूसरा कैटेगरी है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है. What kind of environment do you like, but what kind of environment do you flourish in? क्या आपको ऐसे जगह पे जाना है कि जहाँ पे वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि you lose your identity, you lose yourself, you don't know कि क्या हो रहा है, या फिर आप किसी relatively smaller यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं कि जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें. देखें, एक मैं एग्जांपल देता हूँ. मेरा ताल्लुक जिस यूनिवर्सिटी से है वहाँ 1000 स्टूडेंट्स हैं. अगर आप पाकिस्तान की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ 40,000 स्टूडेंट्स भी होते हैं, राइट. सो देयर इज अ वेरिएशन फ्रॉम 1000 टू say about 40,000 students. So you have to select what is the size of the university. कुछ स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड. आगा खान हॉस्पिटल के एग्जांपल ले लें, बड़ी स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी है. दे आर वेरी पॉपुलर फॉर द मेडिकल कॉलेज एंड नर्सिंग प्रोग्राम. दे जस्ट स्टार्टेड देयर FAS, but very specialized programs. But then some universities have anything under the sky, right? From Arabic language to chemistry to physics to literature, everything. So you have to understand, is that what do you like? You want to be in a specialized school, or you want to be in you like to be in a very big, diverse kind of a school? Do you like to be in a place जहाँ पे आपके पास बहुत सारी facilities हों, या you're okay to self-study and be your own? So what is your persona? What do you like? What kind of environment do you like to be? Do you like to be in all boys environment or all girls environment? Where do you feel safe? Like, there are a lot of universities which are all girls and all boys. So again, आपका persona क्या है? And then you have to determine कि what's a good match. कहाँ पर यूनिवर्सिटी का persona और मेरा persona is a good match. And then I should start shortlisting universities. मैं आपको example देता हूँ कि this is a very awkward example, but आपको just example देता हूँ. Say, let's say you want to do shopping, right? You want to do shopping, so you don't enter every clothing store that you see, right? You have to first know कि अच्छा मुझे शलवार कुर्ता लेना है या मुझे
पैंट शर्ट लेना है या मुझे कोट लेना है, and then you go to a store which is suited for it. Now, of course, there are some stores which have everything, and you can go to that store. But there are some stores which are specialized. There are some stores which are branded, very expensive. There are some stores which are very cheap. Depends on your budget. There are some stores close to your house. There are some stores very far from your house. So all of these, but again, you will, when you will do shopping, you will analyze all of these variables and then go to certain stores, and based on your budget, based on discounts, again, some stores are very expensive. हम तो सोच नहीं सकते कि हम उन store से purchase कर सकते हैं. But suddenly they have excellent discounts available, right? And you go and buy from that store. Think of universities in the same way, in not same way, but similar way. What universities would you like to explore based on which universities are offering scholarships? What kind of scholarships they are offering? Are they suited for you or not? And then you start shortlisting those universities. Again, मैंने बहुत crude example दिए, but I am just giving this example to share कि जिस तरह से आप शॉपिंग में केयरफुली चीज़ों को एनालाइज करते हैं, कॉस्ट को, क्वालिटी को, मुख्तलिफ वेरिएबल्स को, उसी तरीके से यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनको आपको एनालाइज करके एक शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस से गुजरना होगा. तो मैंने बहुत ही जनरल सा आंसर दिया है, बट आई थिंक आई हैव सॉर्ट ऑफ ट्राइड टू कवर सम ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स. आई थिंक सलमान, आपने जो बड़े अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, सो वी शुड नेम द webinar now, university shopping. So, and if in fact it's I think जो आपने पहले बात कही in terms of matching of personalities, चाहे वो कोई भी ऐसा मौका हो जब आपको ऐसी कोई डिसीजन लेना हो, कुछ चूज करने का हो, I think you're absolutely right. And certainly अब हमारे पास ये बहाना भी नहीं है कि we don't have the कंटेंट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. यानी कि आप किसी भी टॉप 10 यूनिवर्सिटी आप लिखें, सिर्फ टॉप 10 यूनिवर्सिटीज और आपके सामने आ जाती, चाहे किसी मुल्क में भी, एंड देन यू कैन एक्चुअली रिसर्च अबाउट देम फ्रॉम देयर ओन वेबसाइट्स और पब्लिक ब्लॉग्स. और फिर आपने जिस तरह से अपनी पिछले 15 या 18 साल गुजारे हैं इन द एजुकेशन प्रोसेस, क्योंकि स्कूल्स तो यू जनरली माँ बाप ही आपके लिए चूज कर देते हैं, राइट, एंड यू आर नॉट वरीड एट दैट टाइम. बट हियर आई थिंक बोथ द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन हैव दैट रिस्पांसिबिलिटी टू गो थ्रू दैट पेन. एंड आई एम सेइंग पेन बिकॉज डेटा गैदरिंग इज अ पेन, you know, research is a pain. हमारे यहाँ unfortunately मैं ये देखता हूँ और मुझे अफसोस भी होता है कि we don't want to get into that pain and later we just suffer because we did not research, we did not gather data. हमने अपने आप को एनालाइज नहीं किया और हमने यूनिवर्सिटीज के साथ मैच नहीं किया, कंपैटिबिलिटी नहीं हुई, और हेंस नाउ अब वो भेड़ चाल वाली बात आ गई. then you just basically take a decision in the end कि चलो जो सस्ता है और जहाँ सब कुछ है वहां चले चलते हैं. So thank you very much, Salman. I think that was a great advice. So मूविंग ऑन, एक और भी चीज होती है कि अब जाहिर सी बात है कि जब आप यूनिवर्सिटीज में भी जाते हैं तो मेजर्स आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है इनिशियली फॉर स्टार्ट के. नाउ व्हाट डू यू वांट टू मेजर इन, बिकॉज़ आई पता मेडिकल है, इंजीनियरिंग है और भी बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, तो मेजर्स. सो किस तरह से इन क्लास 9 और 10 या ओ लेवल्स में ही किस तरह के सब्जेक्ट्स, आपने पहले जिक्र तो कर चुके हैं, लेकिन कोई मेजर्स बता सकते हैं कि कैसे मेजर्स लेने चाहिए टू बी यू नो एलिजिबल फॉर अ सर्टेन यूनिवर्सिटी? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इस पे आई हैव थॉट अबाउट इट माई सेल्फ अ लॉट. अगर आपकी इजाजत तो मैं एक छोटी सी स्लाइड मैंने एक जमाने में डेवलप की थी. आई वांट टू यूज दैट स्लाइड मे बी एज एन एग्जांपल टू मे बी इलैबोरेट माय पॉइंट, राइट? सो I remember using this slide in one of my presentations earlier. Can you see my slide? Yes, we can. All right, great. So choice of field of study or university. So एक बड़ा सवाल ये होता है कि हम किस चीज के बारे में पहले सोचें. हम अपनी फील्ड के बारे में पहले सोचें या यूनिवर्सिटी के बारे में पहले सोचें. Unfortunately, Pakistan is one of the countries जहाँ पे एडवाइस यूनिवर्सिटी के हवाले से होती है और फिर कहते हैं उस यूनिवर्सिटी में आप ये प्रोग्राम अच्छा है, ये कर लें, राइट? सो you have heard a lot of, I'm sorry, I'll take some examples of some universities, but they are just examples. I'm not trying to brand any university in any way. So when you hear people, what do you want to do in future? I want to go to AKU, right? They wouldn't mention कि मुझे मेडिकल करना है या नर्सिंग करना है. अच्छा, आप AKU से क्या करना चाहेंगे? मैं AKU से इंजीनियरिंग करना चाहूंगी. AKU तो इंजीनियरिंग ऑफर नहीं करता है. So just because they've heard a lot about AKU, they just want to go to university first, and then अच्छा AKU में तो ये ऑफर नहीं होता है,
Yeah, we can of course take many more examples. So this is a very simple chart that I would like to present in terms of fields of study or university. ठीक है, तो ये एक 2x2 का मैट्रिक्स है. इसमें एक तरफ चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी है कि आपकी चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी हाई है या लो है, चॉइस ऑफ फील्ड ऑफ स्टडी हाई है या लो है, and based on that decision. And I will give you examples for each one of them so that there is a better understanding. So suppose करें कि आपका एडमिशन किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में होता है जो आपकी टॉप चॉइस यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ जाना चाहते हैं और आपका एडमिशन भी उसी प्रोग्राम में होता है जहाँ आप जाना चाहते हैं. So for example, you want to do medical college, you want to do MBBS, आपका AKU में एडमिशन हो जाता है. You want to do engineering, आपका एडमिशन से GIK में या NUST में हो जाता है. They are very reputed university, आपकी पहली चॉइस भी वही थी. You should absolutely go and pursue it, right? There is no two questions about it. You have thought about a field of study, you have thought about a university, you have an admission there, go and select. What if you now get an admission in a university of your choice, लेकिन फील्ड आपकी चॉइस की नहीं है? और ये आपको मिलता है अक्सर. अगर आप किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे चॉइसेस पूछते हैं कि आपकी पहली चॉइस इलेक्ट्रिकल है, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक है, तीसरी मैकाट्रॉनिक्स है, चौथी बायोमेडिकल है. You would probably think about some of these and then they will say कि भाई आपको जो है वो हम मैकाट्रॉनिक्स में एडमिशन देते हैं जो आपकी थर्ड चॉइस है. Now you want to go to NUST but you don't have admission in electrical, right? You have a choice in mechatronics. Now what do? ख्वाहिश तो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बनने की, लेकिन एडमिशन नस्ट में नहीं हुआ है. What do? Now NUST is a very good school, right? Of course. So my advice would be consider that as an option. Do not reject because you have been offered admission in a field. Reflect and decide. So थोड़ा सा again आपको रिसर्च करना होता है. अच्छा, how different is this particular field from my original field? Is the first question you have to. Of course, अगर आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए अप्लाई किया और आपको वो BBA में एडमिशन देते हैं तो that's a two different set of fields. But if it within the area of engineering, think whether it is close to your original field or not. Does that university offer you a choice to transfer your majors after first year? बहुत यूनिवर्सिटीज आपको हाई मेरिट की बेसिस पे अगर आप 3.8 GPA लेकर आते हैं तो आपको चॉइस देती है कि आप फर्स्ट ईयर के बाद मेजर चेंज कर लें. क्या मेरी यूनिवर्सिटी मुझे ऑप्शंस देती है कि नहीं देती है? अगर देती है तो देयर इज समटाइम्स नो हार्म in going to that university, entering that university maybe for your third choice, and then try and see if you can transfer that university. So मेरा मशवरा होगा कि don't jump to an immediate conclusion, think about it, seek advice from a lot of people and then make a decision. तीसरा ऑप्शन ये है कि आपका एडमिशन होता है ऐसी फील्ड में जो आपकी फर्स्ट चॉइस है लेकिन यूनिवर्सिटी आपकी चॉइस नहीं है. यूनिवर्सिटी बड़ी वो जो है वो मीडियोकर या पुअर क्वालिटी की है. ठीक है, आपने बहुत सी जगहों पे अप्लाई किया, कहीं पे आपका हुआ कहीं पे नहीं हुआ. हम यही एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका एडमिशन नस्ट में हो गया मैकाट्रॉनिक्स में, लेकिन किसी बहुत ही मीडियोकर यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल में हो गया. नाउ यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट? कि मैं अपनी प्रायोरिटी फील्ड मीडियोकर यूनिवर्सिटी में जाऊं या थर्ड प्रायोरिटी फील्ड. और मेरे नजदीक ये वाला ऑप्शन परस्यू करना इज हायर रिस्क, क्योंकि जो जॉब मार्केट है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है आपकी यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, स्पेशली आपके अंडर ग्रेजुएट के बाद. क्लियरली अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ और मेरे पास एक स्टूडेंट ऐसा आता है जो बहुत बेहतर क्वालिटी से आ रहा है, दूसरा स्टूडेंट किसी लोअर मीडियोकर क्वालिटी से आ रहा है, तो ऑफकोर्स मेरी चॉइस वो यूनिवर्सिटी होती है जिसकी मार्केट क्रेडिबिलिटी है. तो ये एक रिस्की ऑप्शन है, आपको बहुत सोचना है. आप इसमें अपने 4 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं. यू हैव टू थिंक कि क्या इस यूनिवर्सिटी पे इन्वेस्ट करके मेरे पैसों का रिटर्न, मेरे टाइम का रिटर्न अच्छा होगा कि नहीं होगा. दिस इज अ रिस्की ऑप्शन बट इट इज अगेन वर्थ कंसिडरिंग. अगर ये ऑप्शन आपको मिल जाता है, आपके पास फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो फिर ऑफ कोर्स ये ऑप्शन को आपको इवैल्यूएट करके इसको कंसीडर करना चाहिए. चौथा ऑप्शन ये है कि आपका एडमिशन कोई बहुत ही लो क्वालिटी यूनिवर्सिटी के किसी रैंडम प्रोग्राम में ऑफर हो गया. You got admission in bachelor's in Arabic in a university in Okada, right? This is waste of time and money, right? You will get a 4-year degree, but there is no reward, there is no return. You are absolutely going to waste your time and money.
अनफॉर्चुनेटली इमरान, अगर मैं थोड़ा सा अपनी यूथ का आसपास जायजा लूं, a very large majority falls in the fourth quadrant. They are going to random university in random programs. They are investing their parents' money. They are investing. चले parents का money तो मसला नहीं, eventually recover हो ही जाएगा वो job करेंगे तो. But they are wasting their 4 precious years. I think this is where you have to think about it very carefully. So of course, when you are choosing a field of study, of course, that's your personal choice. मैंने बात की थी, that's a very long-term process. But once you have clarity of the field of study, you have to choose university and field of study को बड़ा carefully weigh करके, ये एक मैंने quadrant present किया है, इस quadrant को ध्यान में रखें, and then try and make your choices. So I'll stop sharing here. I think that's very beautiful. I think I'm sure some people who were interested took a screenshot as well. I think I've seen it for the first time. I wish I'd seen this earlier. So you're absolutely right, Salman. I think we probably are not paying that much attention on the university selection. हम सिर्फ जब उस वक्त तक पहुंच जाते हैं कि अब खत्म हो गया कॉलेज और अब हमें यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आई थिंक बहुत बिल्कुल आपने सही बात की है कि अगर आप दोनों में लो हैं, यानी कि फील्ड ऑफ स्टडी भी आपको नहीं समझ में आ रही और आपका यानी कि प्रोग्राम भी रैंडम है, यूनिवर्सिटी भी लोअर ग्रेड में है, सो दैट देन यू आर डेफिनेटली डूम्ड. बट अदरवाइज आई थिंक देयर हैज टू बी अ बैलेंस ऑन ईच एंड एवरीथिंग. जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की अगर हवाले से बात करें तो वी हैव गॉट अ एवरेज फेयर चॉइस, नॉट अ ब्रिलियंट चॉइस. बट ये है कि इफ यू डू द रिसर्च एंड इफ यू डू दैट, think of your own field के मैं किसमें अच्छा हूँ, and then in my opinion if you are good in a field then you will excel in any university as far as is above average, and you will be getting good grades and then going ahead in a job. So that's a very very good answer, Salman. Thank you. तो अब ये बात आती है कि अब हमने बात भी कर ली मेजर्स कैसे सेलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी का क्या वक्त होता है, की फैक्टर्स. सबसे इंपॉर्टेंट एक और ये भी है कि अब हम जब बात करते हैं रिसर्च और शॉर्ट लिस्टिंग की, तो क्या टिप्स आप देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को कि अब चूंकि देखिए अगर आप सवालात भी चैट विंडोज पे तो इंडिविजुअल सवालात बहुत सारे फॉल कर रहे हैं कि मैंने एचएससी किया है और मैंने इंजीनियरिंग करना है तो मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊं. वी वुड एक्चुअली अगर कोई हमारे पास करियर काउंसलिंग के लिए आता है और हमारा हमसे कुछ अपनी रिसर्च दिखाकर कोई सवाल पूछता है और कहता है मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, वुड यू हेल्प मी select an option based on this data, तो we say that some research has been, so लोग research नहीं कर रहे. क्या tips देना चाहेंगे आप students को? Alright, good. So देखें, एक तो मैं चीज पहले क्लैरिफाई कर लूं कि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम नेटफ्लिक्स पे मूवी सिलेक्शन प्रोसेस. ठीक है, वो नेटफ्लिक्स नोज अ लॉट अबाउट यू, इट विल एग्जैक्टली टेल यू कि आपको कौन सी मूवी देखनी चाहिए, आप बड़े उससे इंप्रेस होते हैं और आप सेलेक्ट कर लेते हैं. Do not consider university selection as something your parents or your friends know about you and they will tell you what to do, and you should consider what they are saying. They can recommend you, of course वो parents हैं आपके friends हैं, they can recommend you, but their recommendation is also part of the research process. So look at a research process as a number one, as a hard work. There's no shortcut to research. It's a lot of hard work. You will have to put lots of hours in doing your research for university selection. लेकिन ये university selection is a life decision. It's a life-changing decision. Don't take it lightly. Put all your hard work, all your hours in research. So, पहला step तो ये कि आपके generic research करनी है, right? So generic research की बहुत सारी sources हैं. Your friends, your teachers, your mentors, your parents, your uncles, your elder brothers, your chacha ka beta, your pupi ki beti, all of them who are well educated, they've seen the world. That is your first step in the research, right? They will tell you all kinds of advice, all kinds of names. Fine. Listen to them, add to your list. But आपको जो भी research पे पहली advice मिलती है, चाहे वो इंटरनेट से मिलती है, चाहे किसी इंसान से मिलती है या टीचर से मिलती है, उस रिसर्च को अपनी सेकंड टियर रिसर्च से वैलिडेट करें. द वैलिडेशन ऑफ योर ओन रिसर्च फ्रॉम फर्स्ट सोर्सेज इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. सो अगेन मैं आपको एग्जांपल देता हूं. से सम पर्सन कम्स टू मी एंड सेज कि अच्छा मुझे बताएं कि कंप्यूटर साइंस के लिए
लाहौर में बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, और मैं कहता हूं कि मेरे ख्याल से तो लम्स बहुत अच्छी है, that is your first step to research. Okay, so LUMS is a name that I have to explore for computer science. He or she may come to you and say, इमरान भाई आप बताएं कि लाहौर में कंप्यूटर साइंस के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी, आप कहेंगे फास्ट का लाहौर कैंपस बेस्ट है, आपने कहा बेस्ट है, that is a second name they can add to the list. Now go out in the market and validate whether what Salman and Imran have suggested, is it true or not. Okay, and when I say go out in the market, which means talk to people who have gone to that university, talk to people who, and then don't tell me how do we find out. Okay, if you exist on LinkedIn, if you exist on Facebook, you should be able to get to people. If you are an smiley, you should be able to search for smiley friends through your friends. हम कहते हैं ना कि every person in this world is connected to another person in this world through 6 degrees of connection, right? So 6 references में you will be able to find to someone who you want to reach out very, very quickly. So again, as I said, it's a hard work. You will have to put hours to find relevant people, reach out to them, find out information. आप देखें कि LinkedIn पे देखें कि इस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स कहाँ जॉब कर रहे हैं. Are they in some reputed organizations or are they doing some random jobs? जो भी एडवाइस सलमान दे रहा है, इमरान दे रहा है, पेरेंट्स दे रहे हैं, चाचा दे रहे हैं, उसको वैलिडेट करें, उसको वैलिडेट करें, और फिर आप कहें कि हाँ मुझे लोगों ने रेफर भी किया है, मेरी अपनी रिसर्च भी यही इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करती है, और फिर आप जो है वो सेकंड, प्लीज फेसबुक और यूट्यूब वीडियोस को देख, इज नॉट अ रिसर्च. ठीक है, नो, गो टू प्राइमरी सोर्सेज. प्राइमरी सोर्सेज इज यूनिवर्सिटी वेबसाइट. Primary sources are students and alumni of those universities. Those are your primary sources. The YouTube videos, पाकिस्तान की 5 बेहतरीन यूनिवर्सिटी, फला random जो होती हैं, प्लीज उस पर ना जाएं. Go to primary sources. So do multi-tiered research. There is one website which I usually use for my initial research. I will, if you allow, I will quickly show you the screenshot of that website as well. Please do. So this is the website, EDU Vision. Can you see it? Imran, are you able to see it? Yes, absolutely. So this is a website I use for a very initial research. So अगर मुझे 1 मिनट अगर आप दे दें तो मैं I can quickly explain how this website works. Yes, please. अगर आप जाते हैं eduvision.edu.pk पे, तो यहाँ पे आता है programs का मेन्यू. Simply go on to programs menu and it will give you a choice कि आपने कौन सी फील्ड में पढ़ना है. तो आप कहते हैं कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो से आर्ट एंड डिजाइन में है, और मैंने जो है वो बैचलर्स लेवल पे पढ़ना है, और आपने कहा सर्च. तो ये आपसे कहता है कि अच्छा पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आर्ट्स एंड फैशन की फील्ड्स में, सॉरी, तो उसने आपको बता दिया कि ये फील्ड्स हैं जो कि आर्ट्स एंड डिजाइन के अंडर एग्जिस्ट करती हैं. अब आप कह रहे हैं अच्छा आपका इंटरेस्ट है फाइन आर्ट्स के अंदर, सो आपने फाइन आर्ट्स पे क्लिक किया, तो अब वो आपको बताएगी कि फाइन आर्ट्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर 67 यूनिवर्सिटीज हैं जो बैचलर्स ऑफर करती हैं. और फिर आप कहते हैं कि नहीं मेरा इंटरेस्ट तो सिर्फ और सिर्फ से कराची में है, और फिर आप कहते हैं सर्च. तो ये आपको बताएगी कि कराची के अंदर जो है वो इस वक्त 2 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि फाइन आर्ट्स की फील्ड ऑफर करती हैं. कौन सी? फाइन आर्ट्स, बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स ऑफर करती हैं. सो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एंड इंडस वैली. दिस इज योर इनिशियल रिसर्च कि अगर मुझे कराची में बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स करना है तो मेरे पास सिर्फ यही 2 ऑप्शंस हैं. Now you can go to their websites, research more, ask people about this. आप कहते हैं कि नहीं मेरा इंटरेस्ट कराची के साथ साथ लाहौर में भी है, तो आप लाहौर सेलेक्ट करें. दिस इज अगेन लेवल 1 रिसर्च टू फाइंड आउट कि मेरा इंटरेस्ट जिन प्रोग्राम्स के अंदर है कौन सी यूनिवर्सिटीज उन प्रोग्राम्स को ऑफर करती हैं. दिस इज योर फर्स्ट लेवल ऑफ रिसर्च. सेकेंड, ऑफ कोर्स, यू गो मोर इन डेप्थ, फाइंड आउट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम, फैकल्टी ऑफ द प्रोग्राम, कितने साल का है, क्या कॉस्ट है. All of this information you have to explore. So this is again is a good university. It remains updated. Again, इसके और भी features हैं. इसमें scholarships के बारे में information है, इसमें universities के बारे में information है, इसमें international education के बारे में information है. तो of course, this is a good first level information that you can find from this university, this website.
This is brilliant, Salman. I think many questions on the chat कि मैं कैसे रिसर्च करूं या क्या जो है मैंने फील्ड स्टडी किया तो उसकी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है. आई थिंक आपने जो ये वेबसाइट बताई है वेरी वेरी feasible for the students to search on, or it's like if you're searching for a property to rent or a car to buy. So very very feasible. Again, Thank you I'll so just much. sorry, Ibran, to interrupt, but again, I will advise. This is your first level of research. This is not your final research. First level of research. So this is just a starting point. But of course, you have to put a lot of hours and hard work to then sort of shortlist your options. That's absolutely right. And I think if you really focus on this, then you will definitely get your answers very quickly. So अब हम बात करते हैं कि अब हम let's say we shortlisted or मेजर्स भी हमारा डिसाइड हो गया है. अब अगर हमारी कुछ यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट हो चुकी हैं अगर हमारे दिमाग में, हाउ डू द स्टूडेंट्स असेस के एकेडमिक रेपुटेशन और क्वालिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी. क्योंकि एक तो इट्स लाइक वर्ड ऑफ माउथ, बिकॉज आप ऐसी बात उन लोगों से बात करना चाहेंगे जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं. Otherwise, obviously, there's a website. But if you want to get credible information about the reputation, academic reputation, and quality of a university, what are the ways you can go about doing that? All right. So I think जो थोड़ा सा मैं biased हूँ यहाँ पे, लेकिन I think the first starting point could easily be, I'm sure many of you would know कि Aga Khan Education Board एक undergraduate scholarship provide करता है for bachelors in Pakistan to Smiley students. They have a list of recommended programs and universities. These are very well researched about reputation, about their graduate absorption rates, their quality. So that could be your first starting point. So अब आप देखें कि अगर आप किसी भी उस प्रोग्राम में चले जाते हैं जो कि उस लिस्ट के अंदर है, you are eligible then to apply for scholarships from Aga Khan Education Board. Now, of course, Aga Khan Education Board is Imamat funding. It is invested very wisely. So, of course, it is only invested in programs that they consider high quality. So this is a very easy available reference. You can write to, you can go to your local education board and ask for a list of universities. They will have a list of universities. They can write to Education Board for Pakistan and the list can be shared. So that would be your very first starting point in terms of the list. दूसरा मैंने पहले बात की कि the best idea is to talk to students who have been there. कोई स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में दिल से बात करेगा, ठीक है ना? But of course you have to ask the right questions. You cannot ask a question, how is your university? हर शख्स जो है वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए उससे अच्छा करार देगा. But you have to ask very specific questions like, how is the physics program in your university if you are interested in physics program? What kind of faculty you have in this program? What kinds of labs do you have in your university for this program? What is the faculty to student ratio in your university for this program? What kind of projects students do for this program? And you will have to ask specific question. If you will ask a generic question, you will get a generic answer. If you will ask specific questions, you will get specific answers. As I said, research is hard work. There's no shortcut to it. So you will have to ask specific questions. There are so many Facebook groups, LinkedIn groups of these university students. Post some of these questions, start a thread, you will receive a lot of responses. Carefully evaluate what are the major threads in terms of responses. You will get some very positive, some very negative. What are some average responses around it? तीसरी चीज आप ये भी देख लें, वो होती है accreditation. Accreditation is very important because एक तो ये कि of course पाकिस्तान में हम रहते हैं तो यहाँ पे HEC accredits universities. So any universities which is not accredited by HEC is of course is a no-go university. You should not go there. Your degree has no value, no worth. It's not accredited. Similarly, हमारे यहाँ पे कुछ accreditation bodies होती हैं, engineering की होती हैं, पाकिस्तान Engineering Council, medical की अपनी है, nursing की पाकिस्तान Nursing Council है, chartered accountants की AKEB'P की body है. तो whether your schools or universities are accredited by these institutions is also an important indicator. Don't go to universities which are not accredited by these institutions.
एक चीज मैं जरूर वार्न करूंगा और वो ये है कि देयर इज अ रैंकिंग बिजनेस दैट हैपेंस अ लॉट। HEC को एक जमाने में शौक हुआ था रैंकिंग इशू करने का। यू विल सी सम रैंडम रैंकिंग्स जिसमें रैंडम यूनिवर्सिटीज टॉप पे आ रही होती हैं। रैंकिंग्स आर नॉट, इवन ग्लोबली भी बहुत सारी रैंकिंग्स क्वेश्चनेबल होती हैं। रैंकिंग्स आर फर्स्ट लेवल ऑफ रिसर्च but are not an ultimate indicator of the quality of the university। जब आप किसी यूनिवर्सिटी को रिसर्च कर रहे होते हैं, इसको प्लीज 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 प्रोग्राम स्पेसिफिक लेके रिसर्च करें, ठीक है? कराची यूनिवर्सिटी इज अ वेरी लार्ज यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी इज अ वेरी लार्ज यूनिवर्सिटी। इट्स स्टूपिड टू आस्क हाउ इज कराची यूनिवर्सिटी। इट्स मोर वाइज टू आस्क हाउ इज कराची यूनिवर्सिटी फॉर साइकोलॉजी, हाउ इज कराची यूनिवर्सिटी फॉर केमिस्ट्री। So ask very specific questions about the university to assess their programs. करेक्ट। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात कि एक्रेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक HEC की वेबसाइट बड़ी क्लियर है इस बारे में। कोई ये शिकायत नहीं कर सकता कि मुझे नहीं मालूम था कि ये यूनिवर्सिटी HEC रिकग्नाइज नहीं है। और आपको मालूम ही है कि डिग्रीज को लेकर पाकिस्तान में कितना इशू होता है बाद में। आई नो पीपल हु हैव डन देयर डिग्रीज बट देन इवन इन फॉरेन कंट्रीज जहाँ वो काम करते हैं, जब वो डिग्रीज जमा कराते हैं, in the end if they find out excuse me, that it's not accredited, though they can actually lose their jobs. It's a very very important point। जो लोग स्पेसिफिक सवाल कर रहे हैं कि मैंने ACCA किया है तो अब मैं CA कहाँ से करूं, या मैंने HSC, I'm sorry, really sorry that this webinar we want to give you all the tools and factors pertaining to university selection process। Your local education board resource is always available। I think आप जितने आप WhatsApp ग्रुप्स हैं आप लोगों के पास शायद पहले कभी भी ना हो, ये ऐसे स्पेसिफिक सवाल प्लीज लोकल एजुकेशन बोर्ड तक पहुंचाइए और वो आपको स्पेसिफिकली गाइड करेंगे। एंड दे हैव दोज रिसोर्सेज बिकॉज वी प्रोवाइडेड। एंड और इस वेबिनार के हवाले से आपको वो टूल्स पिकअप करने चाहिए। इन सवालों के जवाब जो हम आज अपने एक्सपर्ट गेस्ट से पूछ रहे हैं, they will really help you। So I would just request you to focus on this। अब जिस तरह से हम आगे चलते हैं, अगर कि छोटे छोटे और भी चीजें होती हैं कि जिस तरह से हाई स्कूल का जो एग्जामिनेशन बोर्ड है, जिस तरह हमारे पास मेट्रिकुलेशन सिस्टम है जो गवर्नमेंट का सिस्टम, वी हैव दी आगा खान एजुकेशन बोर्ड, वी हैव दी कैम्ब्रिज सिस्टम और इंटरनेशनल बैकलॉग सिस्टम, काफी बोर्ड्स हैं हमारे पास। तो वो एग्जामिनेशन बोर्ड चूज करने के हवाले से और इसका क्या लिंक है विद द यूनिवर्सिटी सिलेक्शन? Again, this is a very long discussion, but I will probably spend maybe 3-4 minutes to talk about it. So number one, it is very important, and I'll explain why, because there are clearly two very broad areas जहाँ पे इनका impact हो सकता है। So number one, so let me go back। So if you are planning to go to a public university in Pakistan, ठीक है, public university का मतलब है government university। So government universities, not all of them, but a lot of them rely on your intermediate and metric results, right? क्योंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो of course they want to absorb a lot of Pakistani students। So of course if you are coming from a Cambridge background जहाँ पे आपने equivalence लेनी होती है, और जब आप equivalence लेते हैं तो आपकी A level का percentile does not translate into equal percentile in equivalence। So अगर आप for example आपकी A levels में 3 A's हैं for example, और आपका ख्याल है कि ये 95% बनता है, तो जब आप इक्विवेलेंस में जाएंगे तो आपका 95% ही बनेगा, आपका शायद 85-82% बनेगा। सो क्लियरली जब आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, आपका शायद 82-85% होगा। आपका कंपटीशन उन स्टूडेंट्स के साथ है जिन्होंने मैट्रिक और इंटर बोर्ड में 95%, 94%, 93% लिया है। डिस्पाइट 3 A's, यू आर क्लियरली एट अ डिसएडवांटेज, क्योंकि वो मैट्रिक एंड इंटर के रिजल्ट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली काउंट करते हैं। Similarly, NED is one example, right? So NED has a quota system by examination board। So NED बड़ा clearly कहता है कि 1,900 seats are for students coming from Karachi board, X number of seats are for those who are coming from Aga Khan University examination boards, X number of seats for federal board, X number of seats for Cambridge examination board। So you clearly have a disadvantage if you are not from a Karachi board, if you want to go to NED university। However, so this is public universities, so there are some constraints that you need to understand। और शायद metric में O levels करना है
या लोकल सिस्टम करना है, उसका डिसीजन भी इस बात पे है कि आपने फ्यूचर में पब्लिक में जाना है, प्राइवेट में जाना है, बिकॉज यू क्लियरली हैव अ डिसएडवांटेज और एडवांटेज इन 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 दिस एरिया। स्पेशली अगर आपने मेडिकल स्कूल में जाना है तो पाकिस्तान में प्राइवेट मेडिकल इज वेरी एक्सपेंसिव, पब्लिक मेडिकल स्कूल are relatively inexpensive, and if you want to go to public medical schools, your chances of going through the local examination board, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या AKEB'P का हो, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू से A levels। ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं होते हैं, बट चांसेस आपके कम हो जाते हैं। अगर आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी इट्स एन ओपन प्लेइंग फील्ड, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपके मैट्रिक या इंटर के एग्जाम्स को ऑफ कोर्स काउंट करती हैं, बट उससे ज्यादा वो अपने एडमिशन टेस्ट के ऊपर रिलाई करती हैं। और एडमिशन टेस्ट का मतलब है कि यू हैव टू हैव वेरी गुड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट्स इन मैथ, सर्टेन थिंग्स इन इंग्लिश। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के सवाल कर सकती हैं। उस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बाय एंड लार्ज A levels या AKU examination board prepares you better than say a local examination board, जहाँ पे of course they are improving with every year, still not there, but as we are aware हमारा जो current examination, local examination, public examination system है, it's not at par with say AKU examination board या A level. So of course अगर आप local examination boards के थ्रू आ रहे हैं तो आपको admission test के लिए बहुत ज़्यादा prepare करना होगा, because you may not be prepared very well in your high schools. पर अगर आप AKU examination board के process से गुजरे हैं और A levels के process से गुजरे हैं तो भी आपको admission test के लिए तैयारी करनी होगी. Of course, there is no exemption to it, but you will have to spend relatively less time because you already have a lot of concepts clear in your mind for these admission tests. So there is this element that people need to be aware of as they are preparing for universities. Well said, Salman. बिल्कुल आपने डिटेल में हमें बताया how important choice of a board it is. And I'm getting a feeling now that a lot of decisions need to be taken when you're in grade 9 to 10, a lot of it, including the examination board कौन सा लेना चाहिए, subjects कौन से select करने चाहिए, even sometimes the school और जिस तरह से आपने बताया. So now अब छोटे छोटे फैक्टर्स भी होते हैं. अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स हमसे बात करते हैं, इवन पेरेंट्स ऑफ क्योंकि हमारे यहाँ चूंकि ऐसी बात है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में ट्रांसपोर्टेशन एक इशू तो जरूर होता है, गेटिंग टू अ पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी. सो हाउ इसको किस नंबर पे 1 to 10 किस नंबर पे इस चीज को कंसिडर करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या है? So इसमें दो फैक्टर्स हैं ऑफ कोर्स. एक ये है कि क्या वो यूनिवर्सिटी आपके शहर में या आपके शहर के बाहर. अगर आपके शहर में है तो आई थिंक दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, आई वुड से 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. एक, हाउ फार इट इज एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज इन्वॉल्व्ड. आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ बिग इशू. प्रॉफिट मोहम्मद का कॉल है कि इल्म हासिल करने के लिए चाइना भी जाना चाहिए. तो अगर आपने कोरंगी जाना है तो मसला नहीं है, मतलब इट वुड टेक एन आवर टू गो टू कोरंगी. Some of the best universities in Karachi are not in the center of the city, right? Because there is no space to build a university in the city, right? आपने यूनिवर्सिटी बनानी है तो आपको शहर के बाहर जाना पड़ेगा. शहर के अंदर तो जगह ही नहीं है यूनिवर्सिटी बनाने की. सिर्फ टावर्स बड़े बड़े खड़े हो सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रॉपर यूनिवर्सिटी तो शहर के अंदर नहीं बढ़ सकती है. तो लोग जाते हैं, अगर मैं चूंकि कराची से वाकिफ ज़्यादा हूँ तो लोग फास्ट जाते हैं जो कि बहुत दूर है. लोग टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट जाते हैं, लोग CBM जाते हैं. दे आर वेरी वेरी फार. So I don't think, as long as you can arrange for a safe transportation, almost all of these universities have their own transportation system. So transportation within the city should not be a big issue. I think what is more important is the safety and security of the area where you are going, especially if you are using public transport. Post universities होती है जिनकी late evening classes होती हैं, sometimes वो area सिक्योर नहीं होता है. तो अनलेस कि यूनिवर्सिटी खुद आपको ट्रांसपोर्टेशन दे बहुत सेफ तो ठीक है. बट इफ यू आर रिलाइंग ऑन अ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड द यूनिवर्सिटी ऑफर्स इवनिंग क्लासेस व्हिच आर समटाइम्स नॉट सेफ, तो यू हैव टू जस्ट सॉर्ट ऑफ थिंक अबाउट सम ऑफ दीज एरियाज. हाँ, अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो आपने चूज की है वो शहर से बाहर है, किसी और शहर में है, फिर बहुत सारे फैक्टर्स उसमें कंसिडर होते हैं. आई विल जस्ट सॉर्ट ऑफ मे बी टच अपॉन 3 or 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. तो एक तो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपकी कॉस्ट एस्केलेट हो जाएगी
there's an additional cost of housing, there's an additional cost of food, there may be an additional cost of transportation depending कि आप on campus hostel में रहते हैं, कहाँ रहते हैं. But clearly your living costs are going to go up significantly because अपने शहर में रहते हैं तो you live with family, कहीं और जाते हैं तो आप these are additional costs. दूसरा ये कि being away from the family is not easy. साल के अपनी लाइफ के 18 साल फैमिली के साथ एक कंफर्ट, आपके पेरेंट्स आपका बड़ा ख्याल रखते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, खाना हर वक्त तैयार होता है, चीज़ें रेडी होती हैं, आपको पता नहीं हो, आपको बहुत कुछ पता नहीं होता जो आपकी लाइफ में आपके लिए हो रहा होता है, ऑटोमेटिकली आपको लगता है हर चीज़ ऑटोमेटिक हो जाती है. जब आप खुद किसी और शहर में जाके हॉस्टल में लाइफ रहते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि चीज़ें ऑटोमेटिक नहीं होती, करनी पड़ती है. सो वो एक लाइफ का एक एक्सपीरियंस है. बहुत से लोगों के लिए एनरिचिंग होता है, बहुत से लोगों के लिए डिप्रेसिंग होता है. दैट्स अ फैक्टर यू हैव टू कंसिडर. एंड थर्डली आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ एक्सटर्नल pressures that you face in a life when you live independently. Some universities have very good support systems. कुछ universities counseling provide करती हैं, support systems provide करती हैं to make sure कि you have a good settlement process. कुछ universities होती हैं they don't care about you, who you are, where are you coming from, what support you need. So those are some of the issues that you have to address. But of course, life could also be very, very exciting going away from your own city. But we have to carefully weigh the costing options. What, again, your persona, your personality is important. What is your personality? What you like, what you don't like? Will you be able to adjust? Do you have people around? So I think those are important questions to answer. I think brilliantly answered, Salman, that. And मेरे जो एक personal opinion है वो ये है that I think if you do go to another city or another country, it does make a difference to your overall learning experience because आप सिर्फ और सिर्फ वो subject नहीं पढ़ रहे होते बल्कि आप बहुत सारी ऐसी चीजें सीख रहे होते हो जो teenagers या post teenagers हमारे यहाँ नहीं सीख पाते जब तक वो अपनी वालिदैन की छत्र छाया में रहते हैं. जैसे हमने कहा कि वो कुछ चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है because it's an independent life, and I think a lot of people that I've seen have really grown to immense levels जब वो एक दूसरे मुल्क में जाके पढ़ाई करते हैं यूनिवर्सिटीज के हवाले से. So now सबसे बड़ा important सवाल I think सबके ज़हन में होगा, how do you evaluate cost and financial aspects? किस तरह से हम, क्योंकि sometimes I think this becomes the real big factor in the end. तो किस तरह से इसको सोचा जाए, समझा जाए, किस वक्त ये कहा जाए कि हाँ अब बताएं कि पैसे कितने हैं? So I think again this is, I don't want to go a very long-winded response, but एक जो major mistake students करते हैं is that they don't look at the full 4-year cost. ठीक है ना, बहुत सारे students अपनी planning करते हैं first year cost पे और फिर कहते हैं कि अल्लाह मालिक है. That's a very dangerous thing to do. I think 7 out of 10 people that I meet face financial challenges because they've only planned for or arranged for first year cost, and then they have a lot of hope कि हमें कोई scholarship मिल जाएगी या हमें कोई loan मिल जाएगा या हमें कोई donation मिल जाएगा या कुछ हो जाए. So that hope creates a lot of other issues in terms of depression, anxieties, other people drop out, etc. So important thing is to look at the 4-year cost. What is the 4-year cost? And what are my financial resources? What are my personal financial resources to afford that cost? Are my personal financial resources 5% of that 4-year cost? 10%, 15%, 50%? वो आपको बहुत पता होना चाहिए. और जो गैप है वो कहाँ से आएगा? और वो गैप जो है वो 4 साल कहाँ से आएगा? If you don't know about how you will meet those costs for 2nd, 3rd and 4th year as well, don't take a very risky decision based on the first year cost only. पाकिस्तान इस वक्त जिस inflationary बहरान से गुजर रहा है, expect all the costs for the next 4 years to increase by 25-30%. So आप ये नहीं कह सकते कि मेरी आज cost 2.5 लाख रुपए की है तो 4 साल में 10 लाख रुपए होगी. That's absolutely wrong. आपकी शायद 4 साल की cost 13 to 15 lakhs हो जाएगी, right? So how are you planning for 13-15 lakhs? एक तो ये important factor है. दूसरा आपको पता होना चाहिए कि good universities will have financial resources to fund you.
Mediocre universities are there to get money from you. Right? So if you go to good universities, very good universities, they will have financial resources, चाहे वो merit scholarships होंगी, चाहे वो need scholarships होंगी. You will have to do a lot of research to find that out. There are external scholarships. मैंने आपके साथ एक website share की है. They have a list of a lot of scholarships. हमारे अपने जमात के अंदर limited scholarships, Aga Khan undergraduate scholarship हैं. Recently IYS ने एक फाइनेंशियल एड प्रोग्राम, लोन प्रोग्राम शुरू किया है इस्माइलिया यूथ सर्विसेज ने हमारी जमात के लिए. वो एक लोन प्रोग्राम अवेलेबल है. डू नॉट गो ऑन बैंक लोन्स. बैंक लोन्स में हमारे पास कोई एजुकेशन लोन नहीं होता है. दे आर प्राइमरली, एक्सेप्ट फॉर मे बी नेशनल बैंक का लोन, most of the other private bank loans are personal loans, very high interest rate. They are not of good use, so I will encourage not to go for personal loans. Look for scholarship etc. लेकिन एक एडवाइस प्लीज ये होगी कि जब आप फाइनेंशियल कॉस्ट दिख रहे हो तो लुक एट द 4-year costs including the projections based on, अगर आप शहर मूव कर रहे हैं तो उसमें cost of boarding and lodging, books की cost, all of that. And again, there are ways to reduce your cost, right? You can use used books, you can use cheaper transportation, you can use different meal options जो universities देती हैं, cheaper meal options. All of those costs you can reduce. अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अच्छे से मकान में रहूं, मैं रोजाना बर्गर भी खाऊं और मैं जो हूँ वो सिर्फ करीम और उबर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन यूज करूं, तो फिर ऑफ कोर्स योर कॉस्ट आर गोइंग टू एस्केलेट. सो यू हैव टू आल्सो नॉट ओनली मेक श्योर कि आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, बट आपकी अपनी कॉस्ट भी जो है वो एक सर्टेन लेवल पे हो जाए. बट प्लीज डू नॉट यूज कॉस्ट एज द ओनली फैक्टर टू यूज यूनिवर्सिटी. हमारी नस्लें तबाह हुई हैं क्योंकि वो सस्ती यूनिवर्सिटीज गई हैं विच आर नॉट गुड क्वालिटी यूनिवर्सिटीज. Even if you spend less money, that money is wasted, including your 4 years. And I think Salman, what you said is so right. और ये मैंने notice किया है, and correct me if I'm wrong. The very good university, the top universities, sometimes are also cheaper. ऐसा नहीं है कि वो बहुत महंगी है. Sometimes they do have private programs as well, जो कि फिर उनके लिए होते हैं शायद जो कि इतनी मेहनत नहीं करना चाहते for the entry tests and everything. So and then of course I think there is one or two factors as well. जिस तरह culture की जब बात की जाती है, campus culture, university, अगर कोई foreign university है, how do you gauge कि अब एक दूसरे मुल्क में अगर हम चले गए या दूसरी सिटी में, क्योंकि देखिए जो बच्चा भावलपुर या रहीम या खान में रह रहा है उसके लिए कराची भी एक बड़ा मॉडर्न सिटी होता है. तो किस तरह से वो अपने आप को एडजस्ट करे और किस तरह से सोचे कि what culture will the university offer in terms of all the factors? So in an ideal world, Imran, you would want to go to the university and the city to see it yourself. अगर हम पाकिस्तान के environment की बात करते हैं, देखिए अगेन इसलिए मैंने कहा यूनिवर्सिटी सिलेक्शन आइडियल प्रोसेस है. आप क्लास 9th में सेलेक्ट करें, ठीक है. क्लास 9, 10, 11, 12 यू हैव 3 to 4 summers अवेलेबल. हमारे लोग बड़े शौक से पाकिस्तान टूर पे जाते हैं, घूमते फिरते हैं, उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं. लेकिन यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के लिए, यूनिवर्सिटी विजिट्स के लिए टाइम नहीं निकालते. अगर मैं यहाँ पे जिस भी शहर से लोग मौजूद है, अगर मैं उनसे पूछूं कि आपने अपनी ही यूनिवर्सिटी में अपने ही शहर में कितनी यूनिवर्सिटीज को विजिट किया है, तो आई डोंट थिंक आई विल गेट अ वेरी लार्ज नंबर. But if I ask them where do you spend your summer vacations, they can list many cities where they go to. So again, this is a very serious investment. You have to go and be there. अगर आप local environment की बात कर रहे हैं, of course, international environment में this is very very difficult. And again, traveling within Pakistan to explore universities should not be a very expensive venture. You can take a bus ride to go to a city. You can go and share rooms with your friends, stay there for 2-3 days, explore universities, come back. Many universities offer open house sessions. Go there and learn about. Go and talk to students on the campus. Don't talk to them just on the social media. Go and talk to them on campus with the students. Learn about their culture. Spend a full day there, and that's how you find about the culture. So again, class 9 से शुरू करेंगे तो आपके पास बहुत टाइम है यूनिवर्सिटीज एक्सप्लोर करने के लिए. इंटर के एग्जाम के रिजल्ट के बाद प्रिपरेशन करेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कैंपस कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें. सो टॉक टू पीपल. यू कैन ऑफ कोर्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो मेंशन करूंगा वो है कि लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट लाइफ या स्टूडेंट एक्स्ट्रा करिकुलर ऑफिसेज के क्लब्स होते हैं, दे हैव देयर फेसबुक पेजेस.
where they post the kind of activities they do on campus, right? They give you some insight to what the university campus culture is, right? अगर उनके सोशल मीडिया पे कुछ एक्साइटिंग एक्टिविटीज, उनके कैंपस पे कोई एक्साइटिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, तो यू विल सी इट ऑन देयर कैंपस कल्चर. अगर वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं अगेंस्ट सम टीचर्स, तो यू विल सी इट ऑन देयर यूनिवर्सिटी फेसबुक पेज, राइट? सो जस्ट डोंट गो टू यूनिवर्सिटीज मेन फेसबुक पेज, लेकिन उनके स्टूडेंट्स के बहुत सारी एक्टिविटीज और क्लब्स के होते हैं फेसबुक पेजेस. गो एंड सी व्हाट काइंड ऑफ पोस्टिंग्स, पोस्टर्स, वीडियोस दे पोस्ट, दे गिव यू सम इनसाइट अबाउट दैट. बहुत अच्छी आपने एडवाइस दी. आई थिंक दिस इज एन आई ओपनर टुडे इन द सेंस दैट यू कहते हैं ना कि एजुकेशन टूरिज्म, एंड आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट कि लोकली हम नहीं जाते अपनी किसी करीबी यूनिवर्सिटी में. हमें सिर्फ नाम मालूम है कि नस्ट है, जीआई के, कराची यूनिवर्सिटी, आईबी. आई थिंक वी काइंड ऑफ स्कैर्ड कि ठीक है जब हो जाएगा तब जाएंगे. Why not right now? Why not in grade 9 and 10 just visit this university and get a feel of it? कुछ लोगों ने यही पूछा है कि पता कैसे चलेगा यूनिवर्सिटी सही है या नहीं है वगैरह वगैरह. ऑब्वियसली जब जाएंगे, विजिट करेंगे, और ऐसे कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होगा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाए और कहें कि आई एम इन 9th right now, maybe few years later I'll be here, can you give me 5 minutes of your time to explain to me? They will be happy to do that. I can bet Imran ke more than 70%, maybe 80% students go to their university of choice for the first time for admission test, when they go for admission test. तो जो कि online admission forms होते हैं, तो you don't even have to physically go for application forms, right? Which just reflects how poor we are in terms of our research process. Yes, that's correct. मोबाइल फोन लेने जाएंगे तो 4 बार पहले मार्केट जाएंगे, चेक करेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी एडमिशंस के लिए हम उसी दिन जाएंगे जिस दिन हमारा एडमिशन टेस्ट होगा. That is so true, and I think हमारी कम्युनिटी में जो कि एक और कराची का सबसे बड़ा अस्पताल भी है, आगा खान हॉस्पिटल, अगर अस्पताल भी जाएंगे तो भी उसकी यूनिवर्सिटी में नहीं जाते. So okay, so I think towards the last question and then we'll take some questions. Common mistakes, 3 या 4 top. एक तो आपने बता दी कि in terms of the financial, but what is the other top mistakes जो हमारे यहाँ students करते हैं when selecting universities? So I think, as I said, very first mistake is not doing research. ठीक है? Relying on the advice of teachers or friends or parents or uncles or aunties as the advice. मैं इस यूनिवर्सिटी में या इस फील्ड में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि I know this person who has been very successful and is a graduate of this university. This is an excellent advice as the first step of your research. मैंने पहले बात की थी. So I think that's a basic mistake people. लेकिन हमारे पाकिस्तान में I'm sorry to sort of stereotype it, लेकिन ये है. It's based on my experience. हमें सक्सेस खुद लेना होता है और ब्लेम दूसरों पे डालना होता है, राइट? सो इफ someone will end up going to a good university, good program and have good career, I have really worked hard on this, and they will take full credit of this. If someone ends up going to a poor quality university or poor program, चूंकि मुझे इसने ये एडवाइस की थी तो मैं इसके कहने पे यहाँ गया था, या चूंकि मेरे पेरेंट्स के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे इसलिए मैं इस यूनिवर्सिटी गया, they will always find someone to blame and put the burden on. And this is all happens because we don't do proper research. This is the first mistake people do, and I again advise. मैं देख रहा हूँ questions, मुझे बड़ा अफसोस है कि अभी भी वो questions आ रहे हैं जिसके बारे में I am advising against it. Please don't ask me what is a good university for this program. Go and do your own research. मैंने आपके साथ अभी एक वेबसाइट शेयर की है EDU Vision की. Go and do your first research there. That is your starting point. I am not your starting point. ठीक है? So go there. देखिए वही मिस्टेक कर रहे हैं जो मैं मना कर रहा हूँ शुरू से कि प्लीज ना करें. Second mistake is calculating full costs. People don't calculate the full cost of education. वेबसाइट पे जाते हैं, सिर्फ ट्यूशन कॉस्ट देखते हैं, कुछ और नहीं देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, and then this is the third mistake I think they make is they settle for a very low quality university. अगर हमने अभी एडमिशन नहीं लिया तो मेरा पूरा साल जाया हो जाएगा.
तो अब चूंकि मेरा यहाँ एडमिशन हो गया है तो अब मैं यहीं पे अपना करियर शुरू कर देता हूँ। मैं अक्सर एग्जाम्पल शेयर करता हूँ इमरान कि जब आप हाई स्कूल कंप्लीट करते हैं तो आपकी उम्र नॉर्मली 18-19 साल होती है। पाकिस्तान में इस वक्त रिटायरमेंट एज नॉर्मली 65 ईयर्स है, राइट? सो यू स्पेंड अबाउट, you have good, after your high school you have about 47 years to do your education and your career. Even if you wait 1 year to go and apply again to better university, it's just 2% of that life. A wrong mistake नहीं, अब चूंकि मैं 1 साल जाया नहीं, चूंकि मेरा एडमिशन कहीं नहीं हुआ and I don't want to waste my 1 year, so I will go to this poor quality university. That decision that you are doing to save 2% of your remaining career productive life is going to waste 98% of your life, right? अगर आपने एक गलत decision लिया, but by investing that 1 year again in working hard, improving maybe your grades, by preparing for your admission test and trying to go to a better university, exploring scholarships, doing all you can to go to a better quality university, by investing that 2% of that time, you can actually impact your other 98% very, very well. So ये जो concept है ना कि अब चूंकि मेरा एडमिशन कहीं नहीं हुआ है तो let me go there because I do not want to waste 1 more year of my life. That is not a good track to take. 65 तो मैंने आपको अंदाजन कहा है, 65 में कौन रिटायर होता है, right? People work much longer. So I think that's a mindset people. I want to go to the best university, yeah, my top 5 choices, and I will do whatever I need to. I have seen people spend 2 years to go to Aga Khan University. Third attempt में उनका admission हुआ and they waited for it. They don't complain today that I wasted 2 years of my life, right? So that's a third mistake that people make. So I think these are sort of the three top mistakes that people make, and I will. चौथा mistake वो जो लोग अब कब से कर रहे हैं कि आप बताएं कि मैं क्या करूं. On the chat, yes, I can see that. मतलब कोशिश हमारी यही है from the board's perspective that we educate, everybody के nobody can actually tell you. और अगर आप पूछ रहे हैं कि मैं बता दें मैं क्या करूं, it's like किसी से पूछना कि यार आज रात को मैं कौन सी मूवी देखूं. It's not that simple. Yes, you need to consider all those factors जो हमने पिछले 1 घंटे में बात की है. Fortunately, we are recording this session. Fortunately, it's going live. Even fortunately, it's going to be available on YouTube forever. I would, if I was a grade 9 student, I would actually watch it again and again and again to जब तक मेरे दिमाग में ये बातें बैठ ना जाएं कि इसमें जो हमने आज डिस्कशन की है वो कितनी फ्रूटफुल है. और जो हमने जो आज बातें की हैं, आई थिंक कुछ जेनेरिक सवाल फील्ड्स के हवाले से भी आ रहे हैं कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर, नर्सेज, इस तरह के हम लोग कंसिडर करते हैं फील्ड्स, जबकि अब सिर्फ कंप्यूटर साइंस या एक साइंस के अंदर ही इतनी सारी फील्ड्स आ गई हैं. और आई थिंक कुछ आपके पास अगर नॉलेज हो in terms of some unique subjects, some unique fields that you can do, and some unique universities which people don't know about. In fact, I think you work for one of those where it's not so popular. या मेरा ख्याल है कि शायद in terms of consideration अभी इतनी newly upcoming है. Look, Imran, you have asked a question that I'll be very reluctant to answer. Right at the start, I talked about university persona and personal persona. And I think हो सकता है कि again, people come to Habib University, जहाँ मैं काम करता हूँ, because of its persona, right? They like what university offers, they like the environment, they like the interdisciplinary program, they like the faculty quality, and they feel that their persona matches their persona. Many people don't come to Habib University and they would prefer going to other universities because it's not that university's persona is good or bad. It's just that it doesn't match their persona. So again, there are several fields, there are several universities. Do the research based on what your preferences are. एक जो आपने सवाल किया है, मैं उस पे एक जरूर important thought present करना चाहूँगा. Again, it's a very conceptual thought. Some people may or may not agree with me, which is perfectly fine. Undergraduate level पे बहुत ज़्यादा specialization करना कभी कभार counter productive हो सकता है. ठीक है? Keeping yourself
a little generic is more fruitful. And I'll give you a little example about it, right? So there are, and I'll take computer science example. Computer science is one of the hottest field right now. A lot of universities offer it. So there are universities which will offer bachelor's in computer science, which is a generic computer science program, and you can do a lot of things. A lot of universities have now started bachelor's in artificial intelligence and bachelor's in machine learning and bachelor's in data sciences. Now, you can do all of that by doing computer science. But you may not be able to do a lot of things within the computer science by doing some of these very specialized fields, right? Now, you have to understand that universities have specific reasons to offer these programs. They want more students. They want to add more programs. Unke classrooms khali pade hue hain, unko bharne hain. They offer a lot of programs with the same faculty. You don't need new faculty members to teach data sciences, right? Your computer science faculty can. But computer science ki aapke program mein cap hai. You can't take more than 50 students. But now you can take 50 more students in data science program. So now you can take 100 students, same faculty numbers. So a lot of universities play around this kind of a notion. So you have to be very, very careful about it. Try and go for more established generic programs rather than going into very specialized programs. I'm not saying good and bad, but just be mindful of it. Maybe sometimes the specialized programs are more suited for you. That's fine. But just be mindful because sometimes going into a specialization program is like going to a very narrow tunnel, which means that now you have a very narrow view of what is available in front of you. अच्छा जी, राइट, थैंक यू सो मच. एक और सवाल ये है कि अगर किसी के मार्क्स अच्छे ना आए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा, अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाएं तो एज ओ लेवल, एज कितने आए, ए स्टार कितने आए, मार्क्स कितने, परसेंटेज किस सबके नहीं आते हैं. वी हैव टू एग्री विद दैट. तो वो एक किसी ने पूछा है कि व्हाट शुड वी डू. अच्छा, अच्छे नहीं है इज अ वेरी सब्जेक्टिव वर्ड, सो आई डोंट नो व्हाट डस. अगर मैं किसी से पूछूं कि आपकी परसेंटेज क्या है, अच्छी नहीं है, 85 आई है खाली. सो कुछ लोगों के लिए 85% भी अच्छा नहीं होता है और कुछ लोगों के लिए 65% भी अच्छा होता है. सो आई डोंट नो व्हाट अच्छा मींस, बट लेट मी जस्ट give you an example and maybe say a few things that some people might not like, but I think it's important to hear it as a perspective. देखिए, नंबर 1, जरूरी नहीं है कि हर शख्स यूनिवर्सिटी जाए. I think that's an important concept to absorb. Many successful people in this world have not gone to a university. They never needed to go to a university. Okay? So that's an important concept to understand. Not every person should go to university. Of course, if you have the talent, the grades, the resources through scholarships, personal resources, you like being in university, you think it's going to help your career, please go there. But if you feel that there are so many constraints that I have to meet to go to a university, and that to a poor quality university, ठीक है, अगर आप सारे पापड़ बेल के टॉप टियर यूनिवर्सिटी में जाएं तो ऑफ कोर्स इट्स वर्थ द एफर्ट. बट सारे पापड़ बेलने के बाद अगर आप मीडियोकर यूनिवर्सिटी में जाएं, इट इज नॉट अ वाइज डिसीजन. यूनिवर्सिटी रिक्वायर्स 4 years of education, right? That's a 4 years of your precious time. वही 4 साल आप ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं in the field of technical education, in the field of entrepreneurship, in the field of, there are many other skills development area जहाँ का reward, both financial reward as well as other rewards, are much more higher than you can ever get in a university education. So I think people who, again, sorry if I am very blunt. If you have poor grades, say you have 55%, if you have 58%, it is for whatever reason. चाहे आप की तबीयत खराब हो गई, एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए, आप दोबारा टेस्ट दे दें 1 साल जाया करके और अच्छे ग्रेड्स ला लें. अगर आपके बचपन से ही फॉर व्हाटएवर रीजंस, बिकॉज हम बहुत सारी इंग्लिश और इंडियन फिल्में देखते हैं जिसमें आता है देयर आर स्टूडेंट्स हु स्ट्रगल इन एकेडमिक्स बट दे आर वेरी गुड अदरवाइज. You have to think about alternate career choices. There are so many. देखिए, आप दुनिया के 20 बिलियनर उठा लें और ये उठा लें कि कितने इसमें से यूनिवर्सिटी एजुकेशन गोइंग थे. आप पाकिस्तान के 20 बिलियनर उठा लें और देख लें इसमें से कितने यूनिवर्सिटी गोइंग थे, राइट? सो यूनिवर्सिटी गोइंग इज नॉट
the only factor for success. Of course, if you can go, good quality education is always good. But 58% लेके 55% लेके mediocre university जाके mediocre field के अंदर mediocre education लेके mediocre job लेके mediocre lifestyle is not the correct path to go. The correct path is to look at, okay, what is, for given my persona, given my skills, given my strengths, what is the right career choice for it, and what is the right kind of training and education for that career, right? Sorry again being blunt, मैं चूंकि इसलिए बैचलर्स बनना चाहता हूं कि मैं फ्यूचर में बैचलर ना रहूं, मेरी शादी वादी हो जाए, मेरा घर बस जाए, is not the right approach, is not the right mindset. You will not get a right rishta if you earn very mediocre, but you will get a very good rishta if you earn very well, and even if you don't have good education, good formal education. So I think you have to think very, very creatively, wisely about some of these decisions. Absolutely, Salman. Thank you very, very much. I think we should, finish it now. There are a lot of other questions, but they're more specific. And what I would advise everyone is that stay tuned, because we have noted all the questions which we will not be able to answer today, क्योंकि काफी specific भी हैं. What we'll do is कि we'll dig down deeper into these, minute subjects. Maybe we'll have to do another career के कौन से field choose की जाए, क्योंकि उसके हवाले से मैंने बहुत सारे सवाल देखे हैं. फॉरेन एजुकेशन के हवाले से जाहिर सी बात है कि वो ऐसे देखा जाए तो पाकिस्तान एक एवरेज पाकिस्तानी के हाथ से निकलता जा रहा है, जो फॉरेन एजुकेशन का एक ड्रीम और प्लान था. आई थिंक अगर पहले 2% पेरेंट्स ये सोच सकते थे तो अब शायद 1% से भी कम हो. तो हम बहुत ऐसे और बहुत सारे ऑल सब्जेक्ट्स पे भी काम करेंगे. At this moment, I'd like to take your leave. Thank you very much, Salman. I think it was a brilliant conversation, and we like it. Blunt is good. Sometimes कोई चीज इंजेक्शन लगाना ही पड़ता है अगर को if you're not well. I think in education level में. So thank you very, very much, Salman, for being with us today. Thank you, the audience. We probably touched about 100 at one time, and this is amazing. And I'm repeating that we'll have this session live. It's been recorded, so it will be available on YouTube forever. Share it with your friends and family. And thank you very, very much. Good evening to you, everybody. And Yali Madar. Thank you, Salman. Thank you.